and Kashmir program. He was there to showcase the Kashmir success story, one that he chalked up to the removal of special status to Jammu and Kashmir. Before addressing the crowd that had gathered there, the Prime Minister visited an exhibition which showcased local products of the Union Territory. He distributed appointment letters, he interacted with women achievers, with farmers and with entrepreneurs. He even bowed down to the Shankaracharya Hill from a distance. But the highlight was his address at the Bakshi Stadium. Many say the fact that he addressed thousands of people in a stadium and not in an indoor convention centre like he has in the past is testament to the change that has come through. Now, Lok Sabha elections are just around the corner. The opposition parties are pushing through with their demand for elections in Jammu and Kashmir. The Prime Minister's visit has definitively acquired a keen political dimension. Has normalcy returned to Jammu and Kashmir? The figures suggest that to a great extent. But can those politicians who today question the Modi government's claims on Naya Kashmir ignore those facts? Does that mean all is well? No, there is much left to be done and no one is denying that. They ask if all is well, why is statehood not being restored? Fair question to ask perhaps, but is it fair to cast doubts on Kashmir's growth story? Are Kashmiris being denied their due because it serves the political purpose of a few? Before we get into that, let me take you through the story so far. Prime Minister Modi vowed to win the hearts of Kashmiris as he made an emotional pitch today in front of a packed stadium in Srinagar. He highlighted that Kashmir is not just any region of India, but it's the crown jewel of the country. The development of the valley will emerge from Kashmir and its people, was what the Prime Minister said. He also then went on to take on his predecessors, the families, the first families of Jammu and Kashmir political parties, because of which the valley has suffered, is what the Prime Minister said. It's a victim of Parivarvad and corruption, was the Prime Minister's speech. He said Parivarvadis have destroyed the J&K bank. He was talking about the corruption in the Jammu and Kashmir bank. J&K was chained by Article 370 just to benefit these political families, is what the Prime Minister alleged. He said that the Congress and the allies, referring to the National Conference, misled the people in the name of Article 370. He also then said that Jammu and Kashmir's success story will attract the world. Post-ending of Article 370, there has been an infrastructure boost in the valley, is also what the Prime Minister said. Now, is Kashmir on the path of unprecedented progress? Well, the naysayers will argue that the numbers are one-sided. But does that change the truth? No. Not long ago, Home Ministry laid down some facts in the Parliament. Stone pelting instances reduced from over 2,000 in 2010 to 0 in 2023. What we now see is better connectivity in Jammu and Kashmir. From 158 kilometers per year road being constructed pre-2019, now over an average of 8,000 kilometer per year roads are being built. Let's take a look at what used to happen before. There were hartals, there were organized strikes that happened. 132 organized strikes were reported back in 2010. There were shutdowns as well. Now we see footfall of tourists increasing. From film shootings to web series promotions to now the Prime Minister even asking India to wed in J&K so that the money flows in, so the economy is booming. As per the Home Ministry, there has been a 70% decline in terror-related incidents post-abrogation of Article 370, from the shadow of terror to Srinagar hosting the G20 Tourism Summit. Kashmir has indeed come a long way, is what the locals as well say there. Last year, remember, Muharram procession was held for the first time in 34 years. It was banned in the 1990s when Pakistan-backed terror was at its peak. That is what the Prime Minister was highlighting, the growth story, the change that has come about in the last 4.5 years. Listen in to the Prime Minister's speech. और मैं 2014 के बाद जब भी आया मैंने यही कहा, मैं ये मेहनत आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूं। मैंने जम्मू कश्मीर को भी हमेशा अपना परिवार माना है। परिवार के लोग दिल में रहते हैं, मन में रहते हैं। इसलिए कश्मीरियों के दिल में भी यही है कि मैं हूं मोदी का परिवार। आप देखिएगा, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की सक्सेस स्टोरी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया। जम्मू कश्मीर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ी भुक्तभोगी रही है हमारी J&K बैंक
इस बैंक को तबाह करने में यहां की पहले की सरकारों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। Now, the Prime Minister said today that Jammu and Kashmir is touching new heights of development, that the centre aims to continue on that path. So what exactly is the plan of the central government? Let's take a look at the developmental works that the Prime Minister spoke of, inaugurated or dedicated to the nation today. 5,000 crore rupees worth projects for agri-economy boost is what Jammu and Kashmir is getting. That announcement was made today. Skilling of 2.5 lakh farmers is also going to be done. This is going to be done via the Daksh Kisan portal. 2,000 Kisan Khidmat Ghars are going to be established over a period of time as well. The Prime Minister initiated 52 tourism sector projects. Of course, this is not limited just to Jammu and Kashmir, but from Jammu and Kashmir, he spoke about these projects that pan across the country. 1,400 crore rupee projects under Swadesh Darshan scheme. That is something that is meant to increase pilgrimages, to increase religious tourism. Again, from Kashmir, he was talking about this for the rest of the country. Distribution of 1,000 new appointment orders specifically to Jammu and Kashmir was also done by the Prime Minister today. Now, the abrogation of Article 370 brought Kashmir's constitutional integration with the rest of the country. That's what the BJP, that's what the government has been saying. Opposition parties may cry foul about that, but the highest court of this country has held that decision as legal. So has the alienation bogey then been busted? That's the big debate tonight. काफ़ी दिनों से सुनने में आ रहा था कि मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए सॉन्ग तैयार करूँगा, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनके कामों से बहुत मुतासिर हूँ। और मैं मोदी जी को देखने आई हूँ। हमेशा टीवी पे देखते थे, लाइव देखते थे, मोबाइल में, तो अभी फेस टू फेस देख रही हूँ। During his crucial Kashmir visit, what was on display for the Prime Minister was also the art and craft of Kashmir. These are the handmade items that the Prime Minister saw today, and something which Kashmir has been proud of for several years. You can see there's a traditional hand making of items that is done, and the government wanted to showcase to the Prime Minister. Prime Minister through his attire has been consistently promoting the Kashmir handicrafts, but today he purchased Pashmina hand-spun, hand-woven stool directly from the artisan. That is what we want. We want the buyers to get connected with the artisan. प्रधानमंत्री ने कहा है, मैं कौन हूँ उनका उसके बारे में कहने के लिए। हमने देखा है, अफसोस है वो मर नहीं आए, उनकी हालत भी देख ली। Joining me on this broadcast, national spokesperson of the BJP, Shehzad Poonawalla, Advocate Nilofer Masood, the leader of the National Conference, Sujata Bashir, state spokesperson of the Democratic Progressive Azad Party, and former DGP of Jammu and Kashmir, SP Waid, join me. I'd like to begin by asking Advocate Nilofer Masood, you may have your reservations. We've had the NC, the PDP all come out and say that, all of these people were either paid for to come to the Prime Minister's address, or they were forced in the freezing cold early in the morning. All government employees were asked to be put in buses without any of their will, and they were all brought to the venue there. All of those allegations aside, can you deny that there has been change that is witnessed on ground in Jammu and Kashmir? That the tourism levels have increased? It's the highest that Jammu and Kashmir has seen since independence. Well, Poonam, let me start that this is not the allegation which has been leveled against the present administration that they have brought the employees for this rally. In fact, this was not a public rally, it was the rally of the employees. The employees from the far-flung areas were brought in the wee hours in the buses of the respective administrative districts, from the respective administrative districts to the venue itself. So it is not a mere allegation. I have the list with me.
which depicts even the number and the people who were just getting them, to whom they had to coordinate. Number one. Number two, we were expecting, in fact, very big, very huge announcements today. On 5th August 2019, so many things were taken from me, especially our statehood. We were degraded, our flag was taken, our privileges were taken. So we were expecting that the elections which were waiting from 2018, a promise will be made that by September it will be the electoral process will be completed. But nothing has come out. Neither the statehood has been restored, neither any such promise has been made vis-a-vis the electoral process, assembly electoral process. Neither any job security or job policy for the unemployed youth. You know that what is the rate of the employment in the presently Jammu and Kashmir. We couldn't find any such phase-wise return of the Kashmiri Pandits. So overall, if you see with respect to the ground level developments which some projects have, some projects, they were already in pipeline. Since they were already in pipeline, and some had already been initiated. So we cannot say that this is a big, huge thing which the people of Jammu and Kashmir were eagerly waiting. Sure, it may not be big, but is there a difference or not? Is there a difference on ground or not? Because you say that your privileges were taken away, but a lot of people would say that their rights that were taken away for decades together have finally been restored. Like all those people, like the Gujars, the Bakarwas, the Pahadis, who now have voting rights, who now have quotas there, like everywhere else in the country. No, it's not like that. Gujars and Bakarwas, they were given due share. Paharis were given due share. We had the reservation for... That's not how they felt, ma'am, unfortunately. See, we already had that. Now, the propaganda is one thing, and then giving vent to the smoke screen, that is different thing. But what actually at the ground level is, we don't have the basic facilities even. We are suffering from the power crisis. We are suffering from the drinking water scarcity. These are the basic necessities. We don't have any ration. These are the basic things. We are fighting with all these problems this time. Nobody is taking care of that. We don't have such things so that we can facilitate ourselves to live a very dignified life. Whoever talks here, he is not able to speak freely. We don't have any right to speech. There are so many things which need to be restored here. It is not only the restoration of the Article 370 vis-a-vis other fundamental rights. So looking at all these things, it has been very disappointing. We as a party and we as the people representing the people of the Jammu and Kashmir. Yes, we as the party of Jammu and Kashmir may be disappointed, but are the people of Jammu and Kashmir disappointed? It looks like it's not, from what we've gathered from what our colleagues have been getting us from on ground. And Shehzad Poonawalla, there is change that is being witnessed. Is there more that needs to be done? Yes, surely. I don't think the Prime Minister or the government is denying that either. First of all, thank you for putting me in a panel that has somebody like SP Vaid, who has served not just the people of Jammu Kashmir but the people of India in uniform. So thank you for that, and I hope Niloofar Masood won't disturb me because I heard out her long opening statement. Let me draw you a mental picture. The gullies of Kashmir, which were once infested with terrorists that SP Vaid dealt with, today have Sachin Tendulkar playing cricket with them. The Hazrat Bal shrine, which is very pious to all of us, including me as a Muslim, was attacked in 93-96, and today it has been restored under the Prasad scheme. Today, Lal Chowk se Lal Kile tak, you have the Tiranga flying high, not ISIS flags. You have a situation in Jammu Kashmir where today you have roads and connectivity being built. The politics of PPP, Patharbaji, Pakistan Parasti and Parivarwad has ended, and 3 families which had a special status, today 30,000 elected representatives are there. Today you have a situation where for 35 years no film could be screened in Srinagar, it has been screened. Today the ghanta in the Kupwara Mandir of Ma Sharde is ringing during Navratri, and at the same time the Srinagar streets are seeing the Muharram Ka Tajia for the first time in 35 years. All of this is not propaganda. If you have been paid today to come for the rally, were the 2 crore tourists also paid, Poonam? The 2 crore tourists who landed up in Jammu Kashmir, today it's not a terror hotspot, it's a tourism hotspot. Please tell me that today she talks about the basic rights. Let me just give you 3 facts, you've quoted many. Today 94 degree colleges have been made 147, 4 medical colleges have been made 11, 867 medical seats are now 2000 plus, 2 AIMS. There are today roads that were built at 158 kilometers per year, 8,000 kilometers per year. This is the reality. And please tell me, Niloofar ji,
Today, terrorism is down by 45%. Have the terrorists also been paid to stop firing bullets? In fact, that's very good. 90% of the infiltration is down. That means they have also been paid. 97% law and order situation has got better. They have also been paid. 65% security forces casualty has reduced. They have also been paid. 95% stone pelting has reduced. They have also been paid. So are you saying that all of these people have been paid? Reality is this, Poonam, that this is the beginning of Naya Jammu Kashmir, for which people like SP Vaid and thousands have sacrificed their lives and their well-being. And as far as Kashmiri Pandits are concerned, let me also talk about that for 10 seconds. Today I am very happy, Poonam. Those people who used to sit idly when Raleef Salif Gali was being said, they are desperate for Kashmiri Pandits to come back. But before rehabilitation, there should be repentance. And I want to ask Nilofarji one thing. Do you agree that what happened between 1980 to 1990 was Islamic Jihad? It was the Islamic Jihad that forced Kashmiri Pandits to move out. You first accept, acknowledge, repent, regret, and stop calling Yasin Malik some kind of Shaheed. First you accept that Yasin Malik is a terrorist. Do you accept? You used to call him for biryani. Today he has been convicted. Sure, and speaking of terror, I want to get in SP Vaid as well. He was the former DGP of Jammu and Kashmir right before the abrogation of Article 370. Sir, you've seen firsthand what the challenges were. Do you feel things have changed? Because the opposition says that the figures that are being put out, that's put out by the government, so let's not believe those. But you've been on ground. I'm sure you can tell us whether those numbers can be taken at face value or not. Poonamji, thank you very much for having me, and my personal thanks to Mr. Poonawala for recognizing the services of J&K police and security forces in Kashmir. There is no denying of the fact that there is a tremendous change on ground. Absolutely. If somebody is denying this, then he or she has closed his eyes. There's tremendous change in the ground situation. You take any parameter of violence, security forces killed, civilians killed, terrorists killed, the band calls, the stone pelting, the burials of terrorists where thousands used to throng and new recruitment used to be done. All that has become things of the past. And the most important aspect people demand from the government is security, and that I think the present government has ensured. There is not single house in Jammu and Kashmir which has not lost his son or daughter or somebody from that family. And I think peace was the most important aspect. The citizens of Jammu and Kashmir were actually longing for, requesting from both state government and the central government. And I think on that front, all credit goes to the present union government headed by Honorable Prime Minister and Home Minister Amit Shah. The ground reality is for everyone to see in Kashmir. As far as other aspects are concerned, once you ensure security of the citizens, that is the first basic thing. They are all looking for development in Jammu and Kashmir. And let me mention here the development push which Prime Minister is giving to Jammu and Kashmir. It has changed the ground realities. There were 4 medical colleges. Today, 12 medical colleges are coming up. J&K is the only state union territory in the whole country where 2 aims are coming up. Already, fortnight back, he inaugurated the Jammu All India Institute of Medical Sciences, and the Avantipur one is almost ready. IIM, IIT, number of national level institutions like Indian Institute of Mass Communication, Indian Institute of Fashion Technology. Now, all these are coming. It's going to become a big education hub. Look at the connectivity. Look at the road network is coming up. The most important connectivity was the railway getting connected with the rest of India. This project is for many years. It's true that it did not start with Mr. Modi. This project is for last 30 years, but the fact remains that it is getting connected today, and that is the credit goes to the present government.
We must accept this, and it is going to change the complete paradigm shift. It is going to bring in Kashmir. Your produce of Kashmir will reach Delhi next morning once train connectivity comes through. Absolutely. We've had so many of these local products that have received the GI tag as well in the recent past. I want to get in the spokesperson of the Democratic Progressive Azad Party as well. So, Radha Bashir, sure, there are many things that Kashmiris want. Whether it's the Kashmiris that really want this or the political parties, that's still up for debate. That is something that would be contested. Elections is something that the opposition often speaks of, that if the government says that there's normalcy in Jammu and Kashmir, then why not hold elections? But the Supreme Court has set a deadline. Why not wait until September to see what exactly happens before trying and crying foul and trying and claiming that all of this is propaganda? See, we are waiting from years now. Now we are, you can say we are used to now. Because none of the state has yet not to be done, elections done. It is the only J&K who has without election, without government and without any facilities. The people are suffering. They are just now, Mr. Punewala said that this thing has been done, this connectivity has been. But tell me one thing, why still the boys are inside the jails? A teenager boy was arrested 7 years back and still he is in a jail. Is that a change? The drugs are growing up here. Is that a change? And still there's an unemployment. This is a change. We are living in a dark days and nights. That is a change. That brings a change here. No doubt the Prime Minister came today. He came as the Prime Minister of India or he came as the BJP chief here. Why the security was fully here and the schools in the Lal Chowk were closed, offices were closed. This is a change. If we go other parts of the state, other parts of the India, there's no close-up, there's no securities, nothing. So that is, it means we are living in still that Kashmir where they say there is a change. What change? This is a change where still houses where the people are not allowed to go out today. This is a change. Mr. Punewala, I think you need to go all through what happening from last 1 year. No, let me complete. I did not interfere. So please keep patience and listen. The dozers are putting up in the houses. The people were promising to give the land, 3 malras. Where is that? This is a change. You can change in that. The people are thrown out of the houses because they were living from 50 years. And Roshni, under Roshni Test, that is removed. That is a change from the people. I don't understand what change you want. The whole India have a lots of things. There is a fall-in, there is a bypass from Mysore to Bangalore. That can be done, but in Kashmir, nothing. In a Pune, there is a highway. So where it's the world's largest highway, still in Kashmir, nothing. I think you forget the Ramban area where still the slides are there. You're telling me, and the railway, it is not your Mr. Modi's project. It's a very old project, 25-year-old project. And don't tell us that there's a change. There's a change still, there's a threat. Today also in the stadium, the government employees were ordered that you have to present in the stadium. Why? Is it a rally or it was a program from the Prime Minister of India? I don't want to understand this thing that you are telling me the change. What change? He said we are going to give the aims. When they are going to give us? It may take 5 years, it may take 10 years, or it may take 15 years. Tell me what you give right now. You are telling G20. G20 is an eyewash. You just But what was given right now, Ms. Bashir, is something that the opposition parties there are not wanting to see. You say the G20 tourism was a sham, but people have come. 2023 has seen the highest footfalls of tourists since independence in Jammu and Kashmir. I think you forget it. Even they were threatened that there will be a threat from the Gulmarg side. They did not allow them to go there. Ms. Bashir, but don't you think this is Ms. Bashir, but don't you think this is a little selective? You can't see the facts that suit your narrative and not see the facts. Can you deny the facts that the number of hartals and shutdown have gone down? There have been nil in the last 2 years. Can you deny that stone pelting has reduced almost to nil in the last few years? Can you deny all those facts? I said drugs are growing. If we want to change, their mindset up. We want to change that the people, the boys who are inside the jail, I take your point there. Drugs are increasing. Most of them are coming via drones from across the border. Would you then call out Pakistan for it? But they are coming from Punjab also. Why don't you stop them from the Punjab? Sure, but the people have been arrested from the Punjab. The authorities there are working on it. The government is working on it. The armed forces are working on it. But they are coming in from Punjab.
They are And coming why- in why- from why we forget from that thing? Pakistan. Why do we forget If you when say they they're put the coming in people from Punjab, India to sure. talk with the Will you also separatists? accept Why they're coming they in allowed from that Pakistan? time? That's my simple question to you, Tell ma'am. me why you people allowed the separatists to talk that time? Why you people put the groups to talk to the separatists? Why? And I think Mr. Wade forget it. They give them a security. That they have a security threat. They have a life threat. Why? It means there were some. But it's the there were politicians in lots of- Jammu and Kashmir that have been wanting talks with Pakistan, even though they've been pushing terror in Jammu Why and we have Kashmir to for talk to the decades Pakistan? together. When we Exactly have- what when the we government has have been issues, saying. Why should we we talk have to Pakistan? Pakistan? Pakistan was not our relation. Pakistan now is not our friend. Absolutely. He was the enemy from Absolutely. the ages. So why we have to talk with the Pakistan? Why we have to Absolutely, talk I'm to the glad you Pakistan? say And that. you're I'm telling glad us you say that, ma'am. I'm sure Shehzad just now you Poonawalla put also will Mr. agree with you Poonawalla on this, told that we must not Nilofer talk with that Pakistan. Yasir Malik But is a Pakistan hero. must We be never called out accept for him what as a they do. hero. You talk about the drug menace and nobody is denying that. Yes, there is an issue. Yes, there is an issue as Poonam, far may as I? drugs are concerned, as far as narco-terror is concerned, but it is narco-terror. It's coming in from across the border and Pakistan must be called out for it. Shehzad Poonawalla, you have a point to make. Yeah, and I heard out the last speaker very patiently, so I hope she'll extend the same courtesy in the manner we are debating. She said that what has changed? I can't see any change. Of course, madam, जो सो रहा है उसको तो उठा सकते हैं, जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको कैसे उठाया जाए? 24,000 घर बने 70 साल में, पिछले 4-5 साल में 1,45,000 घर बने, 7 लाख नल से जल लगे, नलके लगे, टैप वाटर कनेक्शन, पिछले 5 साल में 13 लाख नलके लगे, आप इसको नहीं देख पा रही हो। GSDP ऑफ जम्मू कश्मीर वॉज 1 लाख करोड़, टुडे इट इज 2.27 लाख करोड़, आप इसको भी नहीं देख पा रही हो। हाँ, privileges गए हैं कुछ लोगों के. Those 3 families have lost privileges and DDC elections took place and 30,000 people got elected. आपको ये भी नजर नहीं आ रहा? Madam, please don't interrupt. Madam, we are having a dignified debate. We are having a dignified debate. Madam, we are having a dignified debate. I will give you your time to rebut. Let him finish. Madam, we are having a dignified debate. Let me finish. What you have been doing from the day one. Madam, we are having a dignified debate. Nilofer Masood, You let can him at finish. least speak in Let your him own turn. finish. You spoke very long. Let him finish. Everyone will get their I time. think your Please, PCR let's has keep to do this. the needful. Let's keep this civilized. Shehzad Poonawalla, go ahead. I'll tell you one change that has taken place instantly. The Valmiki Samaj of Jammu Kashmir was not entitled to their rights. They could not apply or have the privileges of Prevention of SC/ST Act. They could not have the privileges of the tribal acts made by the central government. Today those acts apply in the state of Jammu Kashmir. And let me give you some more exact changes that have taken place. Jammu Kashmir Bank, not bank for Maharashtrians like me, bank for people of Jammu Kashmir. Their NPA was 11%, today it is 5%. Its share price was 12 rupees, today it's 140 rupees. It was in loss, today it is in 1700 crore rupee profit. It had a combined business of 1,15,000 crores, it is 2,15,000 crores. Sure. It had deposits of 80,000 crores, today it has 2x deposits. Are these not positive changes? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जम्मू कश्मीर की आवाम के पास स्पेशल स्टेटस है, 3 परिवार का स्पेशल स्टेटस खत्म हुआ है, इसलिए आपके पेट में मरोड़ है. Nilofer Masood, 30 seconds for your rebuttal, please. Unfortunately, I'm out of time on this, but 30 seconds. You had a point to make. Please go ahead. So many things have been said by the Poonawalla. If he is so confident about that everything is everything good has been done by these people, why don't they go for the elections? Sure. Just ask me. Sure. We have told Supreme Court. So many questions. Elections are going to be There is held. a deadline. There is a deadline that has been set by the highest court of the country. Now you can't say that we do not trust the Supreme Court as well. Restore our rights. But the Supreme Court has come down and said that the abrogation was legal. There was absolutely nothing unconstitutional about it. What forced the Supreme Court to make these submissions? Sorry? Accepted by we people we have been making? It is the What highest made court the of the honorable country, court? ma'am. You can't say you don't trust anyone. You No, don't I trust. never You said don't that trust I your don't political trust. I'm a detractors. lawyer. You don't trust. You don't This trust is the highest court of this last country. By the Honorable Home Minister, he said we will give We have been statehood hearing very it from soon. last, But where is that statehood? last 5 years. Sure. Can I have one line, Poonam, to Sure, expose no, I that? want One line. Poonam, one line to unfortunately, I'm expose that. completely out of time, but I want to give the last word to SP Ved. Sir, the question that everyone asks is if everything is okay, then why not have elections? I want you to put this in perspective. Yes, things are getting normal. We're inching towards normalcy, but there is some doubt. Unless that doubt is cleared, we cannot go into an exercise as large as having state elections. Is that the worry?
Poonam ji, the elections deadline has been fixed by highest court of the country. Yes. And that is not, the announcement is not to be made by the Prime Minister. I think the Election Commission of India is the appropriate body, and they are visiting the state on 13th and 14th. After assessing the situation, they are going to, whatever announcement they feel is correct, they are going to make. Yes. And I think people are yearning for elections. I don't deny that. But then that will, I personally believe, will take place at an appropriate time. On that note, I have to leave it at that. I thank you all for joining us here on this debate. Yearning for elections is the sentiment in Jammu and Kashmir. Hopefully that happens, as the Supreme Court has set the deadline of September 2024. For now, we're shifting focus to some breaking news that's now coming in. This is to do with the Bengaluru Rameshwaram Cafe blast. What we're gathering from our sources within the intelligence agencies is now that the pattern of the suspect is what is under investigation. It's clear that there was definitely recce that was done by this suspect multiple times. We're also given to understand that as far as the CCTV footage goes, what is now being investigated is where exactly he went. In one particular CCTV footage, you can see him wearing a cap. Whether that was deliberate, whether that was by mistake, that is something that is still being looked into. Harish, my colleague, is now joining us, getting us more details. Harish, we're given to understand that the cap, whether he removed it on purpose, whether he wanted to be seen in it or not, whether it was just something that slipped out of his mind, all of that is now under investigation, and that perhaps would give a sense of whether this was pre-planned, whether there was someone else behind it, or whether it was a lone wolf attack. Yes, there are multiple aspects which the police are looking into. One is the cap that has been recovered from near a mosque very close to Rameshwaram Cafe. That the investigating agency is not clear if it was a deliberate attempt to mislead the police in a certain way, or it was a mistake that he had forgotten there. But more worryingly, what the agency is telling right now is that they have definite clue till Bellary. That's where he's been last spotted. But he's not visible after that. They do not have his trail after Bellary. That's a worrying sign, because remember, all this has happened in Bellary on the night of the bomb blast. That's on the 1st of March. After that, he hasn't been seen. So he's had a good 5-6 days where he could have found a shelter, safe house, or gone to the destination he wanted to. And the police are finding out about this yesterday and today. So there's a lot of lapse in terms of time. Will they be able to still track him further? And the challenge is, once he crosses Bellary, he has the option of going to a nearby state, going to a rural area which perhaps doesn't have a CCTV coverage. So that makes the entire investigation that much more challenging. Right, Harish, thank you so much for getting us the latest on that. It's time for a quick break here on this edition of The Right Stand, but on the other side, we have a super exclusive interview with Deputy Chief Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis. Do stay tuned for that. मैडम जी टाइम पे एक सहारा लिया पीएमईजीपी का। पीएमईजीपी के तौर मुझे 5 लाख रुपए मिले और मैंने अपना एक कारोबार बढ़ाया। और 2020 में मैंने सर अपनी वेबसाइट खोली और वेबसाइट खोलने के बाद धीरे धीरे मेरा एक बड़ा ब्रांड बन गया। और ब्रांड बनने के बाद हमने ऑनलाइन हजारों केजीज के शहद भेजे। मेरी वेबसाइट पे 2023 में 5000 केजी शहद बिके हैं। और धीरे धीरे करके ये सफर आगे बढ़ा सर। मैंने 2000 मधुमक्खी के बक्से बना लिए और मेरे साथ मैंने अकेला ही काम नहीं किया। मैंने सोचा खुद ही मैं अपना बेनिफिट नहीं लूंगा, मैं और को बढ़ावा दूंगा, अपनी यूथ को इसके साथ जोड़ूंगा। धीरे धीरे करके मेरे साथ लगभग 100 बंदे सर जुड़ गए जो ये मधुमक्खी का काम करते हैं। 100 जोड़ने के बाद धीरे धीरे मैं सर आगे बढ़ा और 2023 में मुझे सर एफपीओ मिला। और एफपीओ के मिलने के बाद अब हमारे पास सर कोई टेंशन ही नहीं। अब तो हम एफपीओ के थ्रू मार्केटिंग लिंकेजेस, एक स्टॉल लगाने पर सर हमें एक स्टॉल में हमने 1-1 लाख रुपए कमाया। और वो भी सर डिजिटली।
हमें दिक्कत होती थी पहले जब एग्जीबिशंस में जाते थे, 1 लाख रुपए जेब में कैसे घूमते थे सर, क्योंकि आज हमारा यूपीआई सिस्टम है। आजकल हमारी 98% पेमेंट डिजिटली हो रही है। तो डिजिटली ट्रांसफॉर्म होने के बाद सर उसके साथ हम भी आगे बढ़े, देश के साथ हम भी सर आगे बढ़े। थैंक्स सर। नाजिम जी, जब पढ़ाई करते थे तब क्या सपना था? सर जिस टाइम पे मैं 10वीं जमात में था तो मेरा सपना, पहले घर वाले मुझे बोलते थे आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, तो मैंने घर वालों का मैं नहीं सुनता था। मैंने सोचा सर मैं अपना दिल का सुनूंगा। तो मैं जब 2 बक्सों के पास गया था तो मैंने सोचा नहीं, मुझे डॉक्टर और इंजीनियर में इंटरेस्ट नहीं है, जो मुझे खुद लगे मैं वो करूंगा। और धीरे धीरे के सर करके मैंने अपना मधुमक्खी का काम संभाला। परिवार आपकी क्षमता को जानता था, आप डॉक्टर बन सकते थे, लेकिन आपने वो रास्ता नहीं चुना और आपने एक प्रकार से स्वीट रिवॉल्यूशन, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना है, हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन सुना है, आज मेरा कश्मीर नाजिम जैसे युवाओं के कारण स्वीट रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर रहा है। बहुत बहुत बधाई। अच्छा नाजिम जी, आपकी इस पहल में जैसा आपने बनाया, सरकार की योजनाएं रही, लेकिन शुरुआत में शायद सरकार में योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आई होगी, या सरलता से आपको समझ आया, मिलता गया? सर 2018 की बात अगर मैं करूं तो मैं पुलवामा, बारामूला, गांधरबल, अनंतनाग सब डिस्ट्रिक्ट्स में गया सर, क्योंकि मेरी तड़प थी कि मैं इस मधुमक्खी के काम में काम करूं। मगर कहीं पे मुझे उस टाइम पे सपोर्ट नहीं मिला। मैं एक एक बंदे के पास गया, लास्ट में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास गया और उन्होंने मेरा हाथ थाम दिया और सफर आगे बढ़ता रहा। नाजिम जी, देखिए मधुमक्खी का ये व्यवसाय जो एक बिल्कुल नया क्षेत्र होता है और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, और उसके कारण फसल को भी बहुत फायदा होता है। यानी मधुमक्खी एक प्रकार के आपका फार्म लेबरर के रूप में भी काम करती है। तो आपके मधुमक्खी के इस काम के कारण किसानों को समझ आ रहा है कि आप उनकी भी मदद कर रहे हैं। सर बिल्कुल, जब भी हम आसपास आज मधुमक्खी डाल रहे हैं, हमारे घर वाले बोल रहे हैं आपको जमीन चाहिए हम दे देंगे, आपको कोई सपोर्ट चाहिए हम दे देंगे। आपका ही फायदा नहीं जा रहा है बल्कि हमारा भी फायदा हो रहा है। इसलिए जब भी हम राजस्थान में जा रहे हैं, हम कोटा में जा रहे हैं सर, हम यूपी में जा रहे हैं, वहां हमें जमीन मुफ्त में दिया जाता है ताकि आप यहाँ पे लगाइए, हमारा फसल भी बढ़ेगा, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। नाजिम जी, आप इतना सारा करते हैं, एक सुझाव मैं देता हूं और आप ऑनलाइन भी करते हैं। सेंट्रल एशिया में जो हनी होता है, उन देशों में हनी, क्योंकि वहां भी ये हिंदू कुछ पर्वत है सारे, वहां भी हिमालय की तरह ही सारी पर्वतमालाएं हैं, वहां की हनी का एक प्रकार अलग है और मैं मानता हूं कि आप ऑनलाइन उसका स्टडी कीजिए। दूसरा, वे लोग अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग फूलों के बीच में अपनी मधुमक्खी का पालन करते हैं। उसके कारण जो हनी मिलता है, उसकी स्मेल, उसका टेस्ट उस फ्लावर जैसा मिलता है, तो उनको बहुत बड़ा मार्केट मिलता है। मैं चाहूंगा, भारत में भी बहुत प्रयास हो रहे हैं, उत्तराखंड में भी बहुत सफलतापूर्वक प्रयास हुए हैं, और नाजिम जी आपने भी जरूर ऐसा किया होगा। सर हमारे जो कश्मीर का हनी है, बाकी जो स्टेट्स का, न्यूजीलैंड का, जो अदर कंट्रीज का हनी है, हमारे भारत का हनी इस टाइम पे नंबर 1 है। हमारे कश्मीर का एकेशिया पूरी डिमांड है सारी वर्ल्ड की सर। हमारे एकेशिया सर पहले 400 रुपया केजी था, इस टाइम पे वो 800 रुपए, 1000 रुपए तक पहुंच गया। नाजिम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जो पहल की उसमें बहुत स्पष्टता और साहस चाहिए, और आपको स्टूडेंट लाइफ में इतना विजन आपका क्लियर होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपके माता पिता को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने आपकी ऐसी परवरिश की, और आपने हर चुनौतियों को चुनौती देते हुए, डट करके सामना करते हुए
आप प्रगति कर रहे हैं, आप देश के नौजवानों को दिशा दे रहे हैं, वरना वो इंतजार करके बैठता है मेरे पास कुछ नहीं है। आपने इंतजार नहीं किया, आपने छोटी सी शुरुआत की और आप आज देश की ताकत बन रहे हैं। मेरी तरफ से नाजिम आपको और आप जैसे युवाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर एक गुजारिश है मेरी सर, एक बार सर मैंने 2023 में KVIC के डिपार्टमेंट में सर मैंने वहां पे एक सेल्फी ली थी, सेल्फी विथ मोदी जी, मगर आज मुझे जी चाहता है कि सर उस सपने को भी मैं साकार करूं, उसको भी पूरा कर सकूं। चलिए मैं कोशिश करता हूं, मैं SPG के लोगों को बोलता हूं, बाद में आपको इस तरफ ले आएंगे, जरूर मैं आपके साथ सेल्फी लूंगा। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। इस टाइम पे मुझे ये 60,000 रुपए मिले, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हो गए, मैं भी मोटिवेशन से फुल ऑफ पावर हो गया कि मुझे 60,000 रुपए मिले। और धीरे धीरे करके ये सफर मैंने सर आगे लिया और धीरे धीरे करके मैंने 200 बॉक्स अपना कायम किए। वो 200 बॉक्स कैसे हो गए, मैंने उस टाइम पे एक सहारा लिया PMEGP का। PMEGP के तौर मुझे 5 लाख रुपए मिले और मैंने अपना एक कारोबार बढ़ाया। और 2020 में मैंने सर अपनी वेबसाइट खोली और वेबसाइट खोलने के बाद धीरे धीरे मेरा एक बड़ा ब्रांड बन गया और ब्रांड बनने के बाद हमने ऑनलाइन हजारों केजीज के शहद बेचे। सर नमस्कार। नमस्ते जी। सर कुर्सी कंफर्टेबल है? पॉलिटिशियन को कुर्सी चाहिए, कंफर्ट वो खुद ढूंढ लेता है। मैं फिर पूछता हूं सर, महाराष्ट्र में कुर्सी कंफर्टेबल है? महाराष्ट्र में बहुत कुर्सियां हैं, जो मिले उसको कंफर्टेबल समझना चाहिए। महाराष्ट्र में जिसको जितनी कुर्सियां मिलने वाली हैं उससे सब कंफर्टेबल हैं? देखिए फिर एक बार बोलता हूं कि जो कुर्सी मिली उसको कंफर्टेबल समझना चाहिए। पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अपनी कुर्सी को कोई कंफर्टेबल समझता नहीं है, हर एक की नजर दूसरे की कुर्सी पर होती है। तो आपको अगर सुकून चाहिए तो जो कुर्सी अपने को मिली उसको ही कंफर्टेबल समझो। पर वो पॉलिटिशियन ही क्या सर जो ये नहीं कहे कि ये दिल मांगे मोर? देखिए कहने से क्या होता है, कहने को तो मैं ये भी कहूंगा कि ये दिल मांगे मोर, मुझे अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाओ, बनूंगा थोड़ी। तो इसलिए मुझे लगता है कि वास्तविकता समझ लेना ये ज्यादा अच्छा होता है। तो वास्तविकता है क्या? जो आपको दिख रही है। बट यहां पर बहुत कुछ दिख रहा है और कुछ नहीं भी दिख रहा है सर, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप लोकसभा लड़ रहे हैं? जी आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं क्यों लड़ूंगा लोकसभा चुनाव। देखिए ऐसा है कि हाँ मेरी पार्टी अगर कहती मुझे लोकसभा चुनाव लड़ो तो लोकसभा लड़ूंगा, लेकिन अभी तक तो मेरी पार्टी ने मुझे कहा नहीं है और मुझे ऐसे कोई आसार भी नहीं दिखते कि मुझे मेरी पार्टी कहेंगे कि लोकसभा लड़ो। तो अभी मेरा मकाम तो महाराष्ट्र ही है। कुछ लोग चाहते हैं कि आपको यहां से पार्सल कर दिया जाए। वो कुछ लोग आपको ज्यादा मिलते हैं, मुझे मिले तो मैं उनको कन्विंस कर दूं कि मेरी जरूरत यहां है। मैंने ये भी सुना कि कुछ को आप पार्सल करना चाहते हैं। नहीं जी, देखिए जिसको भारतीय जनता पार्टी मालूम है उसने समझ लेना चाहिए, या कोई किसी को पार्सल नहीं कर सकता। अभी फिलहाल एक NDA है, एक MVA है, एक VBA है, उसका क्या रोल है सर? देखिए उसका रोल तो उसके मालिक बता सकते हैं, हम तो नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके जो मालिक है वो अपनी मर्जी के मालिक है। तो अभी तो हम लोग मीडिया के माध्यम उनकी मर्जी के मालिक कौन? मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि उनकी बातचीत MVA से चल रही है। तो जब तक वो चल रही है तब तक वो चल रही है, अगर नहीं चली तो नहीं चलेगी।
अगर हो गई तो हो जाएगी। वो ऐसा है कि उनको कहा जाता है कि वो मुखौटा किसी का पहनते हैं पर तीर किसी और के लिए चलाते हैं। देखिए, अब एक बहुत सीनियर लीडर है, उनके बारे में ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा। वो अपने मर्जी के मालिक है। पर उनकी मर्जी का मालिक कौन है, मैं वही पूछ रहा था आपसे। ये तो आप पता कीजिए ना। ये तो आपका काम है, हमारा थोड़ी काम है। तो कोशिश कर रहा हूं, पर रहा नहीं जाता। आप बैठते हैं तो फिर आई हैव टू स्टार्ट एंड आई स्टार्टेड, बट थैंक यू वेरी मच फॉर फर्स्ट अप टेकिंग टाइम आउट एंड कमिंग टू दिस वेरी स्पेशल एंडेवर, जहां हम बदलाव की बात कर रहे हैं। और बदलाव बहुत बड़ा एक चेंज जिसे कहते हैं ना कि बी द चेंज, और बदलाव हमसे है, उसके आप प्रत्यक्ष प्रमाण भी हैं। तो सबसे पहले आपको इस मुहिम के बारे में मैं पूछना चाहता हूं। नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि ये बहुत अच्छी मुहिम है। देखिए, कई बार हम लोगों को ये लगता है कि समाज ये सरकार के भरोसे चलता है। हाँ, सरकार का मुख्य रोल तो है ही, लेकिन समाज की अपनी व्यवस्था होती है। समाज में अपना एक ताकत होती है, एक ऊर्जा होती है, एक अपना पौरुष होता है जो समाज को आगे बढ़ाता है। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि, और लोग कहते हैं कि जी पुराने जमाने में प्रेरणा देने वाले लोग बहुत थे, अब लोग कम हो गए। ऐसा नहीं है। अगर हम अपने आजू बाजू देखें तो इतने लोग प्रेरणादायी काम कर रहे हैं, हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव हमसे है। ये जो मुहिम है, ये ऐसे लोगों को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं जो अपने खुद के बलबूते पर बदलाव कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। देखिए, मैं कोई भी व्यक्ति, मैं हूं, आप है, दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन हम केवल दुनिया बदलनी है ऐसी बात करेंगे तो दुनिया बदलेगी नहीं। हम अपनी जितनी ताकत है उतनी ताकत से भी अगर कोई बदलाव हम ला पाए तो दुनिया बदलेगी। और मुझे लगता है कि ये जो सारे लोग जिनको आपने चुना है, मैं उनका कार्य पढ़ रहा था, अलग अलग क्षेत्रों में पढ़ रहा था, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये निर्धार किया, जिन्होंने तय किया कि हमारी क्षमता के अनुसार हम दुनिया को बदलेंगे, और उन्होंने बदलकर दिखाया, उन्होंने चेंज लाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत अच्छी मुहिम है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब ऐसे चेंज मेकर्स को आप रिकॉग्नाइज करते हो, उनका कार्य वो आप समाज के सामने लाते हो, तो उसमें लोगों को भी उससे प्रेरणा मिलती है। देखिए, एक हमारे, मैं कई बार ये बात कह चुका हूं, फिर भी कहना चाहता हूं कि एक चाणक्य सीरियल आती थी जी, और इस सीरियल में एक डायलॉग था कि इस राष्ट्र की जितनी दुर्दशा दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई, उतनी सज्जनों की निष्क्रियता से हुई है। और ये जो यथार्थ है, ये जो सज्जन शक्ति है, जो अच्छा काम करती है, उसको अगर हम सक्रियता के साथ समाज के सामने लाएंगे तो मुझे लगता है कि समाज में प्रेरणा बढ़ेगी, लोगों में विश्वास बढ़ेगा, हम भी बदलाव ला सकते हैं, हम भी चेंज कर सकते हैं, इस प्रकार की भावना बढ़ेगी। तो मैं ये जो नेटवर्क 18 ने सारा जो उपक्रम किया है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। थैंक यू वेरी वेरी मच। अब देखिए, मैं जर्नलिस्ट हूं, पत्रकार हूं, तो बदलाव से कुछ याद आया। 2019 में उद्धव जी ने कहा बदलाव हमसे है, उसके बाद आपने कहा बदलाव हमसे है, फिर एकनाथ शिंदे जी बोले बदलाव हमसे है, फिर अजित पवार जी बोले बदलाव हमसे है। अब आगे कौन बदलाव करने वाला है? देखिए, इसका मैं एक लाइन में जवाब दूंगा, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब वो आगे आगे देखने में ही महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि इतनी एक्साइटिंग हो गई है सर कि अगला पन्ना खुलने से पहले ही पूछना चाहते हैं कि होने क्या वाला है। तो ये तो हमारा ऐसा चल रहा है कि ये ऐसी वेब सीरीज चल रही है कि जिसमें 7-8 एपिसोड के बाद हम उस सीजन को समाप्त कर देते हैं और नए सीजन का आपको इंतजार करवाते हैं। पर अगर बड़े पृष्ठ पे देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा 370 बीजेपी को और 400 पार एनडीए को, उसमें सबसे अहम, अगर दक्षिण के राज्यों के बाद 100 सीटें वहां पर दक्षिण के राज्यों में 4 राज्य जहां बीजेपी नहीं है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, उसके साथ अहम कड़ी महाराष्ट्र की 48 सीटें। यहां बाहर लोग कह रहे हैं आपके तो 20 भी नहीं आएंगी। पहले तो मैं आपको सुधार दूं कि 4 राज्यों में बीजेपी नहीं है, ये जो आज आप कह रहे हैं, चुनाव के बाद ये कहने पर आपको पछतावा होगा, इसलिए इस डायलॉग को चेंज कर दीजिए।
देखिए, ये चुनाव, ये पॉलिटिकल अर्थमेटिक का चुनाव नहीं है। पॉलिटिकल अर्थमेटिक होता है 1+1 2। ये पॉलिटिकल केमिस्ट्री का चुनाव है। पॉलिटिकल केमिस्ट्री में 1+1 11 होता है। देश मोदी जी के साथ निकल पड़ा है, चाहे वो पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, या सेंट्रल इंडिया हो, या नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो। सब जगह लोगों ने यह तय कर लिया है कि हम मोदी जी के साथ जाएंगे। तो साउथ में भी आपको चौंकाने वाले नतीजे मिलने वाले हैं। और लोग चाहे जो कहे, महाराष्ट्र में हमने 2 चुनाव में जो परफॉर्मेंस दिया, उससे हम आगे बढ़ेंगे, उससे पीछे नहीं आएंगे। हमने का मतलब एनडीए, हाँ, एनडीए। उसमें बीजेपी का क्या? बीजेपी तो, हमारा तो ऐसा रहा है कि पिछले बार 25 सीटें लड़े तो 24 जीते, तो हमारा तो परफॉर्मेंस ऐसे ही रहेगा। तो अभी 32 सीटें लड़े, 30 जीतेंगे? नहीं, वो आपने थोड़ी तय करना है कितनी सीटें हम लड़ेंगे, वो तो हम तय करेंगे। अरे कुछ तो हमारे लिए छोड़ दीजिए। आज मैंने पत्रकारों को कहा, हमारी सीटें भी पत्रकार तय कर रहे हैं, हमारे कैंडिडेट भी पत्रकार तय कर रहे हैं। मैंने कहा, अब एक वो चुनाव जीतने का एक सर्टिफिकेट भी छाप के हमको दे दो, हम सरकार भी बना लेंगे। मैं तो बस पूछ रहा हूं कि 30 सीटों में 28 जीतेंगे, 32 में से 30 जीतेंगे। तो आपने पिछली बार से तो ज्यादा ही कह दिया है। बहुत सच बात बताता हूं, बहुत सच बात। जल्दी हम बैठेंगे, सब तय करेंगे, और जो तय हुआ आपको बता देंगे। मान लिया जाए इनकी बात को, चलिए। पर देखिए, अभी इन्होंने ही बोला ना कि पिछली बार हम 25 में लड़े, 24 जीते। तो अभी 25 से तो ऊपर 28 का नंबर आता है, 30 का आता है। तो मैंने 30 बोला। उतना तो आप भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। दिल मांगे मोर। मैं जो एक्सपेक्ट करता हूं वो मेरे नेताओं को बताता हूं, पब्लिक फोरम पे नहीं बताता। एक नेता है जो आपके बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। आपने नेता से याद आया, आप उनके घर जाते हैं, वो आपके घर आते हैं, चाय पे चर्चा होती है। बट वो ट्रेन इंजन इस इंडिया की बोगी में फिट होने वाला है कि नहीं? किसकी बात कर रहे हैं आप? रेल इंजन किसकी है सर? अच्छा, रेल इंजन की आप बात कर रहे हैं। देखिए, वो तो समय के साथ आपको पता चले। मैं आज इतना ही कहता हूं कि एक समय ऐसा था कि उनके और हमारे विचारों में अंतर था, क्योंकि हम लोग एक व्यापक विचार वाले लोग हैं। क्षेत्रीय अस्मिता ये तो होनी चाहिए। कोई अगर महाराष्ट्र में रहकर मराठी की बात करता है तो करनी ही चाहिए, लेकिन एक्सक्लूजन में बात करना ये हमारी पार्टी को मान्य नहीं था। हम व्यापक विचार रखने वाले लोग हैं, इसलिए हम में कुछ दूरियां थी, लेकिन विचारों की दूरियां तो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। क्योंकि उन्होंने जब से मराठी प्राइड के साथ एक हिंदू प्राइड को भी अपनाया है, हिंदुत्व को अपनाया है, तो मुझे लगता है कि अब हमारे विचारों में कोई बहुत दूरियां नहीं रही है। अब पॉलिटिकली क्या होगा, वो क्या विचार करेंगे, हम क्या तय करेंगे, ये तो सारी चीजें कुछ समय के बाद तय होगी। पर खिचड़ी ज्यादा नहीं पक रही है सर? नहीं, अब तो बहुत ज्यादा घोलमेल। अभी ऐसा ही होता है, जब एक विशिष्ट प्रकार की परिस्थिति स्टेट में होती है तो ऐसी खिचड़ी पकती है और पकानी भी पड़ती है। लेकिन खिचड़ी कितनी भी हम पकाए, तब भी सेंटर पॉइंट, मेन पिलर तो बीजेपी है और वही रहेगा। पर इसका असर लोकसभा चुनाव पर नहीं होगा? मतलब किस प्रकार से असर होगा? क्योंकि ये खिचड़ी है, तुम ना कोई असर नहीं होगा। अरे भाई, असर होने का सवाल ही नहीं है। अभी 2 ही खेमे हैं, मोदी जी के साथ और मोदी जी के खिलाफ। जो मोदी जी के साथ का खेमा है, उसका सिंबल क्या है, वो व्यक्ति क्या है, ये बिना देखे लोग उसको वोट करेंगे। और जो मोदी जी के साथ नहीं है, उसका सिंबल क्या है और व्यक्ति क्या है, ये बिना देखे उसको रिजेक्ट करेंगे। तो आपको लगता है कि पिछली बार जो ये 48 सीटें हैं, इसमें एनडीए का वर्चस्व पिछली बार से ज्यादा होगा? 42 ज्यादा होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। ऐसा आप मानते हैं? आज उधर महाविकास अघाड़ी के वरिष्ठ नेता हैं, जहां प्रधानमंत्री मेरा भारत मेरा परिवार कहते हैं, तो उन्होंने भी इस पर कुछ कहा है, कुछ टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि वो परिवार कहते हैं पर मानते नहीं है। क्या क्या? परिवार कहते तो हैं पर मानते नहीं। ऐसा किसने कहा? उद्धव जी ने। अरे छोड़ दीजिए, उद्धव जी सुबह अलग कहते हैं, रात को अलग कहते हैं। उद्धव जी खुद को पता नहीं होता वो क्या कहते हैं। और सीधा हिसाब है, मैं आपको पूछना चाहता हूं, उद्धव जी का एम क्या है? आदित्य को मुख्यमंत्री बनाना, यही एम है। मोदी जी का एम है उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का। मोदी जी किसी को भी बनाएंगे तो देश के किसी व्यक्ति को बनाएंगे,
किसी को अगर आगे बढ़ाएंगे तो उनका तो परिवार कोई पॉलिटिक्स में है नहीं, खुद का परिवार भी नहीं है। तो इसलिए ये तो लोगों को पता है किसका परिवार देश है, कौन देश को परिवार मानकर राजनीति करता है और कौन अपने परिवार के लिए राजनीति करता है। अगर परिवार के लिए राजनीति उद्धव जी नहीं करते तो हमारे साथ होते, ये हालत नहीं होती उनकी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, आदमी जब कोई बात करता है ना तो उसकी बात में दम होना चाहिए, उसमें कन्विक्शन होना चाहिए और लोगों को लगना चाहिए कि ये आदमी जो कह रहा है वो सही है। आप खुद ही परिवारवादी राजनीति करते हो, आपको क्या अधिकार है? नहीं कर सकते आप। नहीं, परिवार है इसीलिए परिवार मानता हूं, महाराष्ट्र को परिवार मानता हूं क्योंकि परिवार है। नहीं, उन्होंने क्या कहा मुझे पता नहीं, मैंने सुना भी नहीं। आप जो कह रहे हैं उस पर मैं रिएक्ट कर रहा हूं, मैं सुनता तो उसको सही ढंग से रिएक्ट करता। पर यहां ये भी कहते हैं कि बीजेपी के परिवार के इसको भी प्रधानमंत्री ने नजरअंदाज कर दिया मुख्यमंत्री के पद के लिए। नहीं, आप एक इतने क्या कहते हैं उसको, ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि मुझे उसका कोई संदर्भ ही नहीं लगता। आप ऐसे एक सीक्रेट हमारी कोई इंटरव्यू चल रही है नहीं जिसमें पजल्स है और पजल्स को मुझे छुड़ाना है, ऐसा मुझे लग रहा है कि एक हमारा पजल इंटरव्यू, एक नया इंटरव्यू का एक नया तरीका दिख रहा है। ये मुख्यमंत्री कौन था? आप थे, आप उप मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री हैं, अजीत पवार जी उप मुख्यमंत्री हैं। अब एक की जगह 3 हो गए हैं। कहा जाता है महाराष्ट्र में अब 3 पावर सेंटर हैं, सही है कि गलत है? देखिए, पावर सेंटर एक ही होता है। हमारा जो राजनीति चलती है ये संविधान के अनुरूप चलती है। संविधान ने किसी भी राज्य में एक ही पावर सेंटर बनाया और वो पावर सेंटर है उस राज्य के मुख्यमंत्री। बाकी सारे लोग उनके अंडर काम करते। इस राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है, मैं और अजित पवार हम उप मुख्यमंत्री है। वी डिराइव द पावर फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर, इसलिए हम चीफ मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं। हमारा कोई अलग पावर सेंटर नहीं है। द ओनली पावर सेंटर इन महाराष्ट्र इज चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे। अब देवेंद्र फडणवीस जी ने कह दिया सो कह दिया, पर अंतिम प्रश्न बदलाव हमसे है जोड़ते हुए, क्या भारत के राष्ट्रीय पटल पर और राजनीतिक पटल पर एक ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा जो अभूतपूर्व है इस लोकसभा चुनाव में? मैं ऐसा मानता हूं कि हर मायने में यह लोकसभा चुनाव अभूतपूर्व रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने ये देखा कि एक जिसको अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट कहते हैं, ये केवल जब इमोशनल चीजें आई उसी समय अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट मिला है। लेकिन कोई व्यक्ति तीसरी बार चुनाव को जाए और अपने कार्य के आधार पर अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट ले, ये भारत के इतिहास में हुआ नहीं है, ये पहली बार होने वाला है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी का 3rd टर्म, ये टर्म तो 5 साल का है, पर ये अगले 50 साल की भारत की नींव को रखने वाला है। ये जो टर्म है ये इस प्रकार के देश में बदलाव लाएगा और हमारी देश की विकास की गाड़ी को ऐसी बुलेट ट्रेन वाली पटरी पर डालेगा कि हमको कोई रोक नहीं पाएगा। और आज भी हम देख रहे हैं, हम तो देखिए 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं बने, 2027 में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, 2047 में विकसित भारत की ओर हमको जाना है और हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अभी बनने जा रहे हैं। हम कहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, लेकिन दुनिया के जो पंडित हैं वो कहते हैं कि भारत 9 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है 2030 तक। तो एक प्रकार से अनप्रेसिडेंटेड इस प्रकार के तेजी से हमारा विकास हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि हर एक देश के हिस्ट्री में एक वाटरशेड मूवमेंट आता है, एक ऐसा समय आता है कि जो समय उस देश की तकदीर को डिफाइन करता है, वो समय ये है। आपने आंसर दिया, इसलिए 2-3 सवाल फटाफट मैं आपसे पूछ लेता हूं। 370 पार कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है? 100% कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस ना, बिल्कुल नहीं। पक्का 400 पार कहना कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। आपने बुलेट ट्रेन की बात की, पटरी पे आ रही है कि नहीं आ रही? आ गई। कब? जल्दी दौड़ेगी। जो उद्धव जी ने बुलेट ट्रेन को रोक के रखा था वो सारी रुकावटें हमने दूर कर दी, सारा एक्विजिशन हमने कर दिया, काम बड़ी तेजी से चल रहा है। उसका फर्स्ट फेज, क्योंकि गुजरात में काम रुका नहीं था तो हमसे आगे चले गए काम में, तो वहां पहले दौड़ेगी, लेकिन दौड़ के आना तो मुंबई है। मुंबई आए से वो ट्रेन को
कोई दूसरा गंतव्य तो है नहीं, तो जल्दी मुंबई तक भी आएगी। मुंबई तक आएगी। 1 ट्रिलियन महाराष्ट्र पहले कि उत्तर प्रदेश पहले? देखिए, इसमें तो किसी के मन में सवाल ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत पीछे है। देखिए, बहुत मुझे खुशी है, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य 1 ट्रिलियन की बात करता है और पूरी ताकत के साथ वो उतरे, लेकिन देश में 1 ट्रिलियन की पहली सब नेशनल एंटिटी ये महाराष्ट्र ही होगा, क्योंकि हम लोग इस साल 500 ट्रिलियन पार कर जाएंगे। बाकी लोग हमसे बहुत पीछे अभी। तो 29 तक हो जाएगा? हम लोगों, देखिए, अगर हम लोग बिजनेस यूजुअल भी करें तब भी 32 तक हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने जो एक इकोनॉमिक काउंसिल गठित की थी, इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी, उसने एक रोड मैप हमको दिया है। जिस रोड मैप पर हम चलना चाहते हैं, उस रोड मैप पर अगर हम चलेंगे तो 2029 में हम लोग $1 ट्रिलियन सब नेशनल इकोनॉमी बनेंगे। पायलट फडणवीस रहेंगे महाराष्ट्र में? देखिए, फडणवीस पायलट रहे या फडणवीस झंडी दिखाने वाले रहे, फडणवीस रहेंगे और फडणवीस जहां भी रहेंगे महाराष्ट्र के हित में ही काम करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, देवेंद्र फडणवीस जी। थैंक यू। A very warm welcome. You're watching Brass Tacks. I'm Akanksha Swaroop. Now today the mood in Kashmir, Srinagar was full of festive fervour, jubilation and hope. Hope for peace, progress and development. That until August of 2019 had eluded the valley, as Kashmir remained in the grips of unrest and uncertainty for decades. But today, Prime Minister Modi took the stage amid thunderous applause and cheers in Srinagar's Bakshi Stadium, his words resonating with hope and determination for a Viksit Kashmir. Making an emotional pitch at the packed stadium, the Prime Minister trained his guns at opposition NC and PDP. Referring to Jammu and Kashmir as a victim of Parivarvad and corruption, Prime Minister Modi condemned dynasty politics and accused Congress and its allies of misleading people in the name of Article 370. While Jammu and Kashmir finally hopes for a better future unburdened by